Hello guys, today we will start with the class and object. Okay. For knowing the class syntax, you must know about the structure. Okay. So this is the overview of the structure. You already studied in the C language. Okay. So what is structure? Structure is a collection of data items with same or different types. Okay. It may contain the same data type or it may contain the different data types. So this is the syntax of the structure. Struct, then struct name, then curly braces on and curly braces off. At the same time, you have to use the class, then class name. Okay, curly braces on and curly braces close. Okay, so you already studied. I am just revise the thing. Struct, then life you are taking. Okay, then curly braces on, then character name 50. Okay, I am giving the range of the particular string 50, integer age, float result, and curly braces close. So in above example, life is a structure name. Okay, you have to create one class and you have to give that name. It may be anything. Okay, then name, age, and result are members variable of a structure. Okay, now the limitation of the structure is structure does not allow data hiding, so that is why we are using the class. And structured data type are not like built-in, so that is why we are using object. Okay, so the next one is specifying a class. So what is class? It is a collection of object of similar type. Okay, we can bind the data and its associated function together in a class. Okay, but we cannot bind using the structure. Syntax of class declaration: class, then class name. It is as same as the structure. Then private data member, variable declaration, function declaration, public data member, variable declaration, function declaration. There are two type of data members, private and public. Later on we will see the protected. Okay, now curly braces off. Now variable and function are collectively called class members. So variable and functions are class members or particular class. Only variables are called data members and function are called member. Okay. Now functions. What is function? Private and public are access mode of particular class. Private class members can be accessed only from within a class. Okay. Public members can be accessed from outside the class, from within a class also. Okay. Private member function must be defined inside the class. Private member function can't be called by using dot operator. By default, the members are private. Okay. Public member function can also called by dot operator. Okay. So you can use public data members by using the dot operator. Okay. Now, for example, class IT, I am taking class IT. In a private, I am taking integer a, void input. Okay, this is the function calling. In a public, I am taking integer b, void show, curly braces off. So this is the example of private and public data type. Okay, private mode and public mode. Now, I am defining a member function. Member function can be defined into two places. One is inside the class definition, another is outside the class definition. So inside the class definition, that is called the member function. In this, member function can be defined by using its name and data type. Syntax: data type, function name, and argument list. For example, class ID, I am taking the public mode. Void data integer a, definition inside the class I am taking. Okay, so this is the definition inside the class. So this is called the member function. Okay, I am taking curly braces on. I am taking integer b equal to a. So a की जो भी वैल्यू है वो b में आएगी. सी आउट बे किया मतलब ये प्रिंट होगा. इधर मैं यहाँ पे क्लास को क्लोज कर रहा हूँ. So this is called the member function. You are taking one function inside the class, that is called the member function. Okay. Now, defining the function outside the class. So definition is, in this case, member function can be defined by using class name and scope resolution operator. Whenever you define any kind of function outside the class, at that time you have to define these four dots, that is called the scope resolution operator. Data type, then class name, then function, then argument list. Curly braces on, then function body and curly braces off. For example, you are taking class IT,
curly braces on public. In a public mode I am taking void input integer b, void data, and I am taking integer a. Okay, here I am closing the class and I have to declare one function outside the class, void it, then scope resolution operator. Okay, data type, then class name, then function name. Input, I am taking input, you can take anything. Here I am taking argumentless integer b. So this is called outside the class definition. Here I am taking a equal to b. Okay, we'll see in depth in the next portion. Okay, so this is called the inside the class and outside the class calling of the function. Okay, now private member function, a member function which can only be called by another function of its class is called private member function. You cannot directly call that. Okay, class it I am taking, again I'm in private, I am taking void data. So this is called private member function. Void data is your declaration. See out किया you are my god. अगेन इन पब्लिक void शो किया डेटा, डेटा को यहाँ पे मैं कॉल करवा रहा हूँ. ठीक है, यू हैव टू put one debugger if you are using the code blocks, otherwise you just press the F7 so you can interpret your program. Again I am repeating that in each and every ppt. Void main किया it cpp, cpp is an object of its class. Okay, cpp is object, cpp dot show किया तो अगेन क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा यूजिंग द ऑपरेटर, तो वो पहले शो में जाएगा. ओके, बिफोर दैट यहाँ पे शो में जाएगा, तो शो में जाके डेटा में जाएगा. डेटा में क्या है, सी आउट है यू आर माई गॉड. ओके, तो लिमिटेशंस क्या है प्राइवेट मेंबर फंक्शन की. प्राइवेट मेंबर फंक्शन कांट बी कॉल्ड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. सो डॉट ऑपरेटर से उसको यूज नहीं करना है, इट मस्ट बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास. ओके, सो इनसाइड द क्लास हमने किया है बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया. यहाँ पे क्या था देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अ मेंबर फंक्शन विच कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन. ओके, तो ये अनदर फंक्शन है आपका. डेफिनेशन देखो, अनदर फंक्शन आई एम टेकिंग इनसाइड द क्लास. लिमिटेशन है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन कांट बी कॉल्ड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड इट मस्ट डिफाइन इनसाइड द क्लास. सो इनसाइड द क्लास पहले उसको डिफाइन किया मैंने, एक प्रिंट करवाया एक स्टेटमेंट. उस स्टेटमेंट को अगर मुझे आउटपुट में लेना है तो मैं कैसे लूंगा, एक अगेन आई एम टेकिंग मेंबर फंक्शन. ओके, void show, in that I am calling this data in a show. तो यहाँ पे मैं cpp डॉट शो कर रहा हूँ, तो आप जब भी F7 प्रेस करोगे या डिबगर लगाओगे तो पहले शो में जाएगा, बाद में यहाँ पे डेटा पे जाएगा, डेटा की जो भी वैल्यू है सी आउट वो लेगा. उसके बाद यहाँ पे आप जो रिटर्न जीरो करोगे कोड ब्लॉक्स में तो वो वहां पे जाएगा. और टर्बो सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो गैस सीएच करोगे तो वहां पे जाके आपका आउटपुट आएगा यू आर माई गॉड. सो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर फंक्शन. ओके, नाउ explain nesting of member function. Okay, the next topic is explain nesting of member function. A member function can be called by other member function of the same class, then it is called the nesting of member function. It is as same as, we can say that it is as same as a private function. Okay, so again I am taking that example only. Okay, class it public void data see out the god is great, void show किया मैंने यहाँ पे खत्म किया. ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म किया. अगेन आई एम टेकिंग void it स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे शो. ठीक है, यहाँ पे डेटा किया, डेटा को कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे आउटसाइड द क्लास, एंड यहाँ पे मैंने आउटसाइड द क्लास लिया ये फंक्शन. यहाँ पे void मेन किया, it cpp किया, cpp डॉट शो किया, शो में जाएगा, शो की वैल्यू क्या है डेटा, डेटा इज कॉल्ड बाय शो. ओके, डेटा इज कॉल्ड बाय शो, सो इट इज अ नेस्टिंग फंक्शन. तो अगेन डेटा में से जाएगा यहाँ पे ये है द गॉड इज ग्रेट, वो लेके आपके आउटपुट प्रिंट पे लेके आएगा. ओके, अगेन डिबगर लगा के देखना, पता चल जाएगा. ओके, एज शो इन दिस एग्जांपल डेटा इज कॉल्ड बाय शो, क्लास ऑफ शो एंड डेटा इज इट. ओके, सो आउटपुट इज गॉड इज ग्रेट. दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन. Okay, whenever the question asked in your examination or viva that what is nesting of member function or a private member function, the definition is same. Okay, but nesting of member function में आप inside the class करके भी कॉल करवा सकते हो another function से, और outside the class करवा outside the class भी कॉल करवा सकते हो. ठीक है, सॉरी, outside the class फंक्शन लेके भी करवा सकते हो. एंड इन प्राइवेट मेंबर फंक्शन आप इनसाइड द क्लास एक फंक्शन कॉल करवा के ही करवा सकते हो. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट मेंबर फंक्शन. ओके, यूजिंग नेस्टिंग मेंबर फंक्शन आप आउटसाइड द क्लास एक फंक्शन कॉल करवा के उसके अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करवा सकते हो. ठीक है,
This is the difference between private and nesting of member function. Now, question 6 says explain friend function with example. Okay. This is also called outside the class function. Okay. A function which can have access to all members of a class to which it is declared as a friend is called a friend function. So before the function, you have to use a friend keyword. Okay. So friend, then data type, function name and argument. So here are some characteristics and limitation of friend function. It is non-member function, so you have to define that function outside the class because it is a non-member function. It can't be called by using object. Object से वो call नहीं होगा, ठीक है? Usually it has the object as an argument. It can be declared either in public or in the private section, not in the protected. Okay, it can't access members directly. Indirectly हम member access करेंगे by using dot operator, membership operator, dot से करेंगे. It can access member by using object name and a dot operator. ठीक है, membership operator बोलते हैं. Okay, for example यहाँ पे advantage है. Okay, it can access class member without using class name and scope resolution operator from outside the class. It is non-member function through it can be declared inside the class also. So you can declare that function in inside the class, but you can't call that function inside the class. Okay. For example, program है यहाँ पे. Here I am taking class IT public void data public के अंदर integer a equal to 200 and a equal to 100. Here I am taking friend void show IT cpp. ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज में है इट इज नॉन मेंबर फंक्शन थ्रू दो इट कैन बी डिक्लेयर इनसाइड द क्लास ऑल्सो. तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड फंक्शन को. यहाँ पे क्लास को क्लोज कर रहा हूँ. ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग वॉइड शो आईटी सीपीपी. ओके, आप ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट वहां पे पास कर सकते हो. तो सीपीपी अपना ऑब्जेक्ट है. सी आउट किया सीपीपी डॉट ए को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट कैन एक्सेस मेंबर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर. सो आवर ऑब्जेक्ट नेम इज सीपीपी एंड डॉट ऑपरेटर हियर वी आर यूजिंग फॉर इनसाइड द क्लास. वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर. यहाँ पे ये जो हमको एक्सेस करना है इसलिए डॉट ए लगाया. सी आउट एंडल किया सीपीपी डॉट बी किया. ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिया स्टेटमेंट. वॉइड मेन में आया आईटी सीपीपी किया सीपीपी डॉट डेटा किया. डेटा में जाएगा, डेटा को फैच करेगा 100 and 200. पुट द डिबगर. अगेन आई एम स्पीकिंग दैट पुट द डिबगर. ओके, इन कोड ब्लॉक्स. शो सीपीपी करेगा तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा. 100 and 200 आपका आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल योर फ्रेंड फंक्शन. ओके, पुट द डिबगर and run the program. Always put the debugger. The next one is explain the const member function. Okay, definition is it is a member function that can't be modified data in a class is called the const member function. Okay, a member function can't modify data in a class is called the const member function. Syntax है class IT public integer ab void data a equal to 10 किया, b equal to 20 किया, void show किया. शो के पीछे ये जो फंक्शन है इसके पीछे मैं कॉन्स्ट लगा रहा हूँ. सी आउट कर रहा हूँ a एंड b. क्लास को मैंने यहाँ पे खत्म किया. void मेन किया, आईटी सीपीपी ऑब्जेक्ट लिया, सीपीपी डॉट डेटा किया तो डेटा की जो भी वैल्यू है 10 20 वो फैच करेगा. सीपीपी डॉट शो किया. ठीक है, तो यहाँ पे शो किया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है a एंड b तो यहाँ पे वो प्रिंट करके देगा 10 and 20. सो void show को आप जब भी रिप्लेस करोगे किसी के साथ तो वो नहीं होगा. ओके, दैट function is const. We cannot modify that. Okay, so this is just for your information. Now the next question is explain array within a class and array of object. If we declare array of member of any data type inside the class, that it is called array within a class. Array of object, array of variable of type class is called array of object. Okay, now program class employee public character name 10. यहाँ पे 10 ले रहा हूँ array. ठीक है, इंटीजर एज. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसका वैल्यू है 10 तक आप जा सकोगे. void show सी इन किया नेम, सी इन किया एज, सी आउट किया नेम एंड सी आउट किया एज. सी इन का मतलब है यूजर के पास से हम रन टाइम पे वैल्यू लेंगे. void मेन किया एम्प्लॉय, यहाँ पे लग गया प्रोफेसर, देन 5 वैल्यू दिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे
इंटीजर आई किया, फॉर आई इक्वल टू 1 किया, आई लेस देन इक्वल टू 5 किया, आई प्लस प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफ करके यहाँ पे आई डॉट शो किया, तो शो में जाके सारी की सारी वैल्यू लेगा, ठीक है, अप टू 5 तक जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। ओके, so this is called array of object, okay, and this is called array within a class. It is as simple. Okay, so your next question is explain object as function argument. Okay, so in object and function argument, it would be asked in your examination that you already study the call by reference, call by value, and known member function. Okay, so it is called the friend function. Okay, तो अब तीनों के आंसर सेम ही होंगे। Whenever the question ask explain object as function argument, so तीनों के आंसर सेम होंगे। So for example here I am taking class IT and वही friend वाला जो पूरा है example वो मैं ले रहा हूँ। Okay, so ये तीनों के आंसर वही होंगे। Okay, the next question is explain returning objects. Returning object means function can return object. Okay, function can return an object. For example, I am taking class IT public integer a void data equal to 100 I am taking. In a friend integer show IT CPP I am taking CPP as an object. Again integer d equal to CPP dot a, यहाँ पे एक्सेस करना है तो डॉट a लगेगा, ठीक है। सी आउट d डॉट a किया, रिटर्न किया d को, यहाँ पे void main किया IT CPP CPP डॉट डेटा, डेटा में जाएगा 100 की वैल्यू फैच करेगा, यहाँ पे शो CPP किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगेन फैच करके आपको आउटपुट देगा 100। ओके, तो रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स अ फंक्शन कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, तो फंक्शन के साथ हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया डी को, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेन रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेनेवर यू रिटर्न any object in a return type then it is called the returning an object. Okay, the next question is explain static data member and static member function. Okay, static data member means a class variable which is associated with the class itself rather than with any instance of its class, then it is called the static data member. Okay, syntax is static then data type variable name. Okay, now characteristics, it is initialized to a 0 when first object of its class is created. Okay, only one copy of static member is created for the entire class, only one, not more than one. It is visible only within a class. Static member function, a function that can have access to the static member declared in the same class and can be called using the class name is called static member function. Okay, class के name से ही call होगा, that is called static member function. Okay, syntax is static then data type then function name and arguments. Characteristics and properties. Static member function can have access to only static member of the same class. It can be called using class name as given below. Class name, then scope resolution operator, then function. Okay. Now, here the program is given for static data member and static member function. Class IT static integer count. Okay. So this is your syntax of static data type, data member, ठीक है, static then data type then variable name. So this is your static data type, static integer count. In public I am taking void input count equal to 0, ठीक है, because it is always initialized to a 0 here. So 0 void change count plus plus 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, right. Static void display, here I am taking your static member function, static then data type and name and argument list. Okay, static void display cout count, count को हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। यहाँ पे integer it scope resolution operator count करवाया। In void main I am taking it cpp, cpp is a object, cpp dot input, cpp dot change and it scope resolution operator display. ओके, इनपुट में जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 0 ले लेगा, अगेन चेंज में जाएगा, चेंज में प्लस प्लस है तो 0 का 1 होगा, आईटी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे तो डिस्प्ले में जाएगा, उसको प्रिंट करवाएगा 1 को, ठीक है। ऑलवेज पुट द डिबगर एंड सी द प्रोग्राम, सो दिस इज कॉल योर स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन. ओके, द quote of this session, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Okay, always be a learner. We'll meet in the next session. Thank you.